online classes. Student, as you know that our third chapter has been completed in our previous class. Now today we will revise this chapter. So student, what is force? Force is a push or pull which brings about a change in the state of rest or uniform motion of a body or changes its direction or shape. So what is force? Force is a push or pull which brings about a change in the state of rest or uniform motion of a body or changes its direction or shape. Students, suppose when we apply a force on a stationary body, then it will start moving, and when we apply a force on a moving body, then the motion can be slows down or change direction or speed of motion can be increased. Student, suppose आप किसी भी बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसके मोशन की ही डायरेक्शन में, मीन्स जिस तरफ बॉडी मूव कर रही है आप उसी डायरेक्शन में अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो बॉडी की स्पीड क्या हो जाएगी? इंक्रीज। एंड अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, तब क्या होगा? इसकी स्पीड, बॉडी की स्पीड कितनी हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी और बॉडी रेस्ट पोजीशन पे भी आ सकती है। तो डिपेंड करता है कि फोर्स जो अप्लाई कर रहे हो बॉडी पर वो मोशन की डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हो तो स्पीड इंक्रीज हो सकती है, अगर मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हो तो स्पीड उसकी डिक्रीज हो सकती है और बॉडी रेस्ट पोजीशन में भी आ सकती है। एंड स्टूडेंट, द यूनिट ऑफ फोर्स इन SI system the unit of force is Newton, and which is denoted by capital N. Now student, what is pull or push? Push. What is push? A force which moves a body away from the point of application of force. And what is pull? A force which moves a body closer to us of
application of force. Now student, what is push? A force which moves a body away from the point of application of force. Means जब आप बॉडी पर अपने से दूर ले जाने के लिए फोर्स अप्लाई करते हो, then that force is called push. And a force which moves a body closer to us of application of force means जब आप किसी बॉडी पर अपने पास लाने के लिए फोर्स अप्लाई करते हो, then that force is called pull. Now student, there are two kinds of force. First is contact force and second one is force at a distance or non-contact force. So what is contact force? Contact force. All forces which act on a body directly or through a connector. Connector are called contact force. Student, what is contact force? All forces which act on a body directly or through a connector are called contact force. Means जब आप किसी बॉडी पर डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में जाके फोर्स अप्लाई करते हो या किसी भी मीडियम की वजह से फोर्स अप्लाई करते हो, then that force is called as contact force. For example, frictional force, mechanical force, etc. And these types of forces are known as contact force. Now second one is force at a distance. Force at a distance, or we can say non-contact force. The forces which do not make direct contact with a body but through at space are called force at a distance. Force at a distance. So student, what is force at a distance? The forces which do not make direct contact with a body but through at space are called force at a distance or non-contact force. मीन्स जब आप किसी बॉडी पर डायरेक्ट फोर्स नहीं अप्लाई करते हो तो ऐसे फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? फोर्स एट अ डिस्टेंस. फॉर एग्जाम्पल, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिकल फोर्स, these forces are known as force at a distance. So student, today's class is over. In next class we will discuss different kinds of forces present in nature.